हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। मैं हूं संजीव, आपका मेंटर, आपका गाइड। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम है तो बहुत छोटी, 4 स्टैंजाज में लिखी गई है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग कन्वे करती है। जब हम पोएम को पढ़ेंगे तब हम उसके डिटेल्स में जाएंगे और एक प्रॉपर तरीके से इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बट बिफोर वी बिगिन आवर पोएम आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है छोटा सा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं, जब हम वेकेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी जगह हमारे मन में आती हैं? मोस्ट ऑफ अस प्रिफर टू विजिट द हिली एरियाज, द प्लेसेस विच आर फुल ऑफ नेचर, which are far away from that city and the hustle and the bustle of the city. We prefer to go and have some peace. बट क्या आपने सोचा है कभी कि क्यों आप ये हिल स्टेशन एरियाज को ही प्रेफर करते हैं फॉर योर हॉलीडेज? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी दैट वी वांट पीस। दस इट इज़ हेंस प्रूवन कि हमें शांति कहाँ पे मिलती है? नेचर में मिलती है। नेचर हैज़ दैट हीलिंग पावर एंड दैट इज़ वॉट is going to be the concern in this poem. William Wordsworth had written this poem in 1802, more than 200 years back, but the issues that he had mentioned and the power of the nature is still is same. So without wasting any time, I'll take you on a virtual tour to a field of daffodils where you'll see these beautiful yellow flowers covering up the entire area, and we'll study this beautiful poem titled Daffodils, which has another title that is called I Wandered Lonely as a Cloud. But before we begin, make sure you've liked the video, subscribe the channel, and do share it as well. So this poem was written when William Wordsworth was on a tour along with his sister Dorothy. This poem is part of the romantic movement. अब रोमांटिक से एक ही रोमांटिक नहीं होता है, आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ओके? This romantic movement was an intellectual and a literary movement which talked about giving importance to things that pleased our senses. Because in the year 1760 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए लोगों की लाइफ में और लोग धीरे धीरे मशीन्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और नेचर से लोग दूर जाते गए। सो दिस होल रोमांटिक मूवमेंट वॉज द मूवमेंट to create awareness among the people that nature still had that healing power. और इस पोएम डैफोडिल्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों को ये बताने में और फिर से रियलाइज़ करवाने में कि भले ही हम कितने इंडस्ट्रियलाइज हो जाएं, भले ही हम कितनी मशीन्स लेकर के आ जाएं, बट नेचर का जो पावर है वो हम ओवरऑल या उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये पोएम छोटी सी पोएम है, 4 स्टैंजाज की पोएम है, हम बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे, बट इट इज़ अ पोएम दैट ऑल ऑफ अस will relate with, because हम सभी जब परेशान होते हैं, जब थक जाते हैं, तो हमें एक ब्रेक चाहिए होता है और हमें वो ब्रेक उन हॉलीडेज़ के थ्रू मिलता है जहाँ पे हम इन हिली एरियाज़ में शांति से जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पे हमें कोई परेशान करने के लिए नहीं होता है, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से दूर होते हैं एंड वी कैन enjoy life. So that is the power of nature that this poem will talk about. So let us go on the virtual tour to the field of daffodils. Come along with me. So now we'll discuss the poem line by line, stanza wise. Along with the explanation, I'll also be giving you notes that will prove handy when you appear for your exams. There will be good notes on literary devices, there will be good notes on what theme it carries. So do watch the video till the end, and in the end you will be getting some more notes. So let us see what the first stanza says. But before we begin, we also have to see that this poem has 2 titles. First is Daffodils and the second is I Wandered Lonely as a Cloud. If anyone asks you, or if you are asked a question that what is the other title of Daffodils poem, it is I Wandered Lonely as a Cloud. The poem begins with beautiful lines. Let us read the first stanza and then I'll give you the explanation of it. You can see it on the screen itself. So it says, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. So in the first 4 lines of the first stanza, the poet says that he was wandering like the clouds keep wandering in the sky. So you would have seen small patches of cloud. आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो पैच होते हैं क्लाउड्स के, वो मूव किया करते हैं आसमान में, राइट और नॉट? सो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो एक दिन क्या था, वो ऐसे ही मूव कर रहा था, उसने कुछ सोचा नहीं था कहाँ उसको जाना है, क्या करना है, बट ऐसे चलते चलते क्या होता है, जैसे क्लाउड्स नहीं बिना अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड किए मूव करते रहते हैं आसमान में, तो कहता है मैं उसी तरीके से मैं मूव कर रहा था।
When all at once, he says अचानक से, all at once means अचानक से, what I saw was a host of golden daffodils. So he says all of a sudden, he had not planned this visit to this daffodils field was not a planned one, but वो कहता है कि all at once मतलब कि बिना डिसाइड किए मैं अचानक से मैं देखता हूँ, चलते चलते मैं देखता हूँ कि there is a field full of golden daffodils. और daffodils का कलर कैसा था? गोल्डन था, तो वो येलो, लेकिन वो गोल्डन वर्ड यूज कर रहा है टू एनहांस द पिक्चर ऑफ द डैफोडिल्स. तो हम सोचें, तो लेट अस सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दैट प्लेस वुड हैव बीन व्हिच वाज फुल ऑफ डैफोडिल्स, जहाँ पे खाली डैफोडिल्स और डैफोडिल्स ही थे. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज. ही सेज लेक के बगल में और ट्रीज के नीचे हर जगह खाली क्या था? डैफोडिल्स, and only daffodils fluttering and dancing in the breeze. And the daffodils, it seemed as if they were fluttering and they were dancing. So look at the picturization that William Wordsworth presents before us of the daffodils. हर जगह खाली क्या है? Daffodils है. And it seemed as if they were fluttering and they were dancing. So such was the beautiful picture of daffodils when William Wordsworth had come across them. Let us see what are the literary devices used in the very first stanza. In the very first line we can see that there is an example of a simile. Simile क्या होता है? जब हम comparison करते हैं, तो like और as अगर जो कोई लाइन में आ जाता है, that means it has a simile. Then we see that it also has a personification. You can see it on the screen, right? There is a personification. What is personification? Personification जब आप human characteristic दे देते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते. तो डांसिंग एंड फ्लटरिंग, तो डांसिंग इज द एक्ट दैट कैन ओनली बी डन बाय होम, by humans, but here he says that the daffodils were dancing. Now look at that line also from the very first stanza. I saw a crowd. Crowd is the word that is used for humans, so here as well he is giving human characteristics to the daffodil. So this is a very beautiful beginning of this poem where he mentions that how beautiful that sight of the daffodils was. Shall we move to the second stanza? If the first stanza is clear, in the first stanza he compares himself with a cloud. He has seen a host of golden daffodils that covered the entire area. Beside the lake they were there, beneath the trees they were there. That means they were present everywhere. Shall we move to the second stanza? So the second stanza is right in front of us on the screen. Let us read the second stanza. It says, continuous as the stars that shine. He says that the daffodils were there and they were continuous like the stars that shine. जैसे stars आपके आसमान में रात में आप देखते हैं कि जहाँ तक आप देखते हैं वहाँ तक क्या होता है? stars ही stars होते हैं. उसी तरीके से on that day daffodils were present. वो जहाँ तक देख रहा था, what he could see, he could only see daffodils. What a beautiful sight it would have been. Let us imagine and look at this field of daffodils and connect. Let us become William Wordsworth for a while और हम imagine करें. He says continuous as the stars that shine. जैसे stars shine करते हैं रात में, उसी तरीके से दूर दूर तक जहाँ तक देख रहे थे, what was present? Daffodils were present. And twinkle on the Milky Way. जैसे Milky Way में stars shine करते हैं, twinkle करते हैं, उसी तरीके से daffodils उस field में present थे. जहाँ तक वो देख रहा था, he could only see daffodils. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. So they stretched in never-ending line. That means विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहा है कि डैफोडिल्स वहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी कि वो कंटिन्यूसली हर जगह दिखाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि उनका अंत ही नहीं होगा. इट विल नॉट एंड, एंड नो मैटर हाउ फार यू कवर, नो मैटर हाउ मच ऑफ डिस्टेंस यू मूव, दे विल बी never ending. So many daffodils were there. And the last two lines, 10,000 saw I at a glance. He says as if मैंने 10,000 daffodils एक बार में देख लिए. He did not count, but to just give us a picture, to give us that beautiful sight of that field. He says as if I had seen 10,000 at a glance. एक बार में, at a glance means एक बार में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 10,000 daffodils को देख लिया हो. What a beautiful sight it would have been. Tossing their heads in sprightly dance. And again he says that they were tossing their heads, they were moving their heads side by side. So by the head he wants to convey the top part of the flower. So again we see that in this stanza also William Wordsworth has used the same
figures of speech, the same literary devices which are simile and personification. Simile is again in the very first line, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, comparison फिर से कर रहा है, continuous as the stars that shine. So he is comparing over here the daffodils to the stars. तो daffodils को यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा है, स्टार्स से कंपेयर किया जा रहा है. पहले लाइन में उसने क्या किया था, पहले लाइन में उसने खुद को क्लाउड से कंपेयर किया था, वहाँ पे सिमिली आई थी. यहाँ पे हम देखते हैं वो स्टार्स को किससे कंपेयर कर रहा है, daffodils से. So this is again an example of simile. You can see it right on the screen in the example. It says simile and below that the example is also given. So this will make your life easier when you attempt your exams. Then again an example of personification. But before we go to the personification, we see that he has also used another figure of speech or literary device, that is hyperbole. हाइपरबोली क्या होता है, जब आप एग्जैजरेट करते हैं, जब आप ओवर स्टेटमेंट देते हैं किसी चीज़ के बारे में टू गिव मोर इफेक्टिव अपील टू समथिंग. तो यहाँ पे वो क्या करता है, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, 10,000 उसने देखे नहीं थे, लेकिन वो क्या करता है, वो बोल देता है ऐसे ताकि हमको लगे कि इतने ज़्यादा थे. जैसे मूवीज़ में क्या होता है, हीरो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर के आ जाऊँगा, क्या वो सच में चांद तारे ला सकता है, नहीं ना. तो वो बोलता क्यों है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कन्वे कि वो कितना डेडिकेटेड है इन हिज लव. सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे वो भी बोलता है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली, अनदर लिटरेरी डिवाइस. सो अगर जो क्वेश्चन आता है कि हाइपरबोली कौन सी लाइन में यूज़ किया गया है, या फिर ये लाइन दे दिया जाता है 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, और पूछा जाता है कि इस लाइन में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, तो वो है क्या, हाइपरबोली. देन पर्सोनिफिकेशन अगेन, tossing their heads in sprightly dance. So head और dance again these two characteristics are of who, of the humans. Personification तो हमने समझ ही लिया कि personification मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को living characteristic दे देते हैं, human characteristic specifically दे देते हैं, तो हम personification बोलते हैं. So I hope both the stanzas are clear. Let us move to the third stanza. Let us have it on the screen. So I'll read again and then I'll give you the explanation. So the third stanza begins and it says, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet but could not be gay in such a jocund company. So he says that they were dancing and the sight of the daffodils looked very beautiful. They were literally not dancing, but हवा चल रही थी तो वो move कर रहे थे. So that is what he says, that it seemed as if they were dancing. So he says the waves beside them danced. तो जो लेक था उसकी वेव्स भी मूव कर रही थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था, दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. तो जो वेव्स थे लेक के, वो भी स्पार्कल, वो भी शाइन कर रहे थे, लेकिन डैफोडिल्स के डांस के सामने सब कुछ फीका था. सच वॉज द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द डैफोडिल्स. ही सेज अ पोएट बट कुड नॉट बी गे. गे ओवर हियर रिफर्स टू happy. So he says, and then no matter how sad one was, a poet like me, a poet like William Wordsworth could not help but be gay. That means he could not help himself from being happy. He was sad before he was there because his brother had passed away a few days back. So he is sad, but he says, looking at that sight, beautiful sight of the daffodils, I could only become happy. All my sadness was gone. So such is the power of the nature. Jocund means happy, and which company, whose company is he talking about? The company of the daffodils. When you get a beautiful place like that place, you always are bound to be happy, and you are meant to be happy. Daffodils. He says, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So he says, I gazed and gazed and gazed at the daffodils. So he says, I kept looking at the daffodils. मैं देखता रहा daffodils को और देखता रहा, लेकिन उस समय मुझको वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितना हैप्पीनेस, वेल्थ यहाँ पे वो बात कर रहा है हैप्पीनेस की, कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है आप उसकी वैल्यू हो सकता है उस समय पे नहीं समझ, बट व्हेन दैट थिंग गोज फार अवे फ्रॉम यू देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग. तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं, आप पिक्चर्स लेते हैं अपने मोबाइल में, आप मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती है, बट जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बैठते हैं, तब आप उन पिक्चर्स को देखते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि वो दिन कितना अच्छा था. सो ऑल दीज डेज when they are passing by, you might have clicked many photographs with your friends in the school days. So 10 years back, 5 years back, when you'll sit with your friends और आप उस मेमोरी को रिकलेक्ट करेंगे, हो सकता है आप अपने फ्रेंड से मिल भी नहीं पाएंगे फॉर ईयर्स एंड ईयर्स,
बट दोज मेमोरीज विल स्टे, और वो आपको हैप्पीनेस देंगी। तो वो वही बात कह रहा है कि दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज व्हाट वेल्थ इट हैड ब्रॉट, आई डिड नॉट रियलाइज कि कितना हैप्पीनेस वो डैफोडिल्स का जो फील था उसने मुझे दिया था। बट मे बी वन डे ही रियलाइज, एक दिन वो रियलाइज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, विल मूव एंड सी इन द पोएम। तो इट इज ऑन दैट डे आई डिड नॉट रियलाइज, though I gazed at them, I looked at them very carefully. So you can see it says wealth implies to happiness, and this stanza talks about return to nature. When the romantics, when all those people who were part of that romantic movement were talking about returning back to nature, because लोग बहुत मॉडर्नाइज हो चुके थे, लोगों का जो अटैचमेंट था नेचर से वो छूट रहा था। दैट्स वाई दिस पोएम एंड मेनी पोएम्स लाइक दिस वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द पोएट्स हु followed him later. Let us move to the last stanza and we'll wind up the poem. So he says, for often when on my couch I lie. So he says, on that day when I looked at them, when I gazed at them, I did not realize how much of happiness or wealth they had brought. But now when often I have come back to my house and I lie on my couch, जब मैं अपने सोफा में लेटता हूँ, in vacant or in pensive mood. Vacant means जब मेरे पास कुछ सोचने को नहीं रहता है, I am vacant, मैं खाली बैठता हूँ, or in pensive, pensive means sad mood. So what he does, they flash upon that inward eye. Who are they? They are the daffodils. तो वो daffodils flashback करती हैं मेरे inward eye पे और मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं कि वो दिन कितना अच्छा था. What a beautiful day it was. They flash upon that inward eye. Inward eye, with this he refers to the spiritual connect with the nature and the daffodils, which is the bliss of solitude. So he says that whole memory of that day comes back and it becomes a bliss. Bliss means extreme happiness in that solitude. When I'm alone, solitude over here refers to being alone, and then that whole sight of daffodils gives me happiness. Whenever I sit alone, when I'm idle, when I'm in vacant mood, when I'm in pensive mood, जब मैं sad होता हूँ, मुझे वो sight happiness देती है. जैसा मैंने अभी बताया, आपने जो pictures ली होंगी अपने friends के साथ, हो सकता है उसकी वैल्यू आपको आज नहीं पता चलती है, बट 10 years later, 15 years later, you'll realize the wealth of that, और फिर आप खुश होंगे. So this is the thing that William Wordsworth was talking about. He says, and then my heart with pleasure fills. So he says, whenever I think of that sight of daffodils, my heart fills with pleasure. I feel a lot more happy. I was in pensive mood, मैं sad था, लेकिन मैं अब खुशी हो जाता हूँ, and I feel that I can do things in a positive manner and dances with the daffodils. और फिर मेरा heart जो है, myself, I start to dance like the daffodils danced on that day. Look at this poem. What a beautiful poem. 4 stanzas में उसने कितना beautifully present किया है कि nature का impact कितना ज़्यादा होता है. So when you go to these hill stations, observe things, observe how those places are different from that hustle and the bustle of the city and your busy life. So in the last stanza also there are some notes. We can see vacant mood, he means when he is idle. Pensive mood, he means when he is in a sorrowful mood. And inward eye, with this he means a spiritual connect with the nature. Nature has that healing power. When we are sad, we prefer to sit alone, go to a place which is away from that whole crowded area. So we all do this. Let us wind up the session with this last slide. We can see that Daffodils has another title, that is I Wandered Lonely as a Cloud. There is a rhyming scheme, there is a form of this poem and the major theme. So the form of the poem, if it is asked in your exam, it is a lyric poem because it has some rhyming, it has some rhythm. Okay, और rhyming scheme क्या है? A B A B C C. आप देखेंगे पहली लाइन थर्ड लाइन से मैच करती है, सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करती है, और फिफ्थ और सिक्स लाइन एक दूसरे से राइम करती हैं हर एक स्टैंजा में. पहली लाइन तीसरे से, दूसरी लाइन चौथे से, और फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे से. इसीलिए इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी और सी सी. एंड द मेजर थीम इज रिटर्न टू नेचर एंड स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ नेचर. व्हाट स्ट्रॉन्ग thing nature is. So this was a very short poem. I hope you have enjoyed it, and now there is no doubt regarding this poem, but don't just keep it as a poem. Relate with it, try to connect with it and imply it to your life. So thank you for watching the Virtual World of English. I hope you have subscribed to the channel, and do share and pin your valuable comments if you like the video.